Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. And I'm back with the company law amendments. So JIGL amendments were uploaded in two parts, part 1, part 2. They're already on the channel. If you have not seen them, I'll leave the link to the same in the description box below. And today I'm here with the company law amendments. So let's start the amendments of company law. So company law में just like other subjects amendments आई हैं. From first chapter we will start, as in the part A I will start, and I will also leave the link of this PDF in the description box, so that आप directly इसे जाके check कर सकते हो. And also I will leave the time stamps to the chapters कि कौन से chapter की amendment किस किस time पे start होती है, so that आप अपनी convenience के according chapter जो है easily find out कर सको. Starting with the amendments of the first chapter. So सबसे पहले तो कुछ important committees के बारे में इन्होंने बताया है, जो कि आप डेफिनेटली एक ओवरव्यू ले सकते हो. जस्ट दिस वाज द अल्टीमेट कमेटी, द कंपनी लॉ कमेटी, जिसने अल्टीमेटली कंपनीज एक्ट 2013 को इम्प्लीमेंट जब हुआ था, उसके जो प्रोविजंस हैं या उसके जो इश्यूज हैं, उसकी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को की थी. मूविंग फॉरवर्ड टू कंपनी लॉ का जो ओरिजिन था, दिस एक्चुअली केम फ्रॉम द बबल एक्ट 1720. इट वाज अ यूके बेस्ड एक्ट. इसमें जो है इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, बिकॉज फ्रॉड हो रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो मैनी स्पूरियस कंपनीज वर क्रिएटेड विच वर फॉर्म्ड ओनली टू डिसअपियर, रिजल्टिंग इन लॉस टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक. तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया, दे एक्चुअली the act which is known as the Bubbles Act 1720, they passed an act which, instead of prohibiting the formation of fraudulent companies, made the very business of companies illegal. इन्होंने company का business ही illegal कर दिया, which was later on, the Bubble Act is an English statute which was passed on 9th of June 1720 to prevent corporate fraud. It forbade all joint stock companies not authorized by royal charter. So one of the reasons of the act was to prevent other companies from competing with South Sea. Again, this act was repealed in 1825. तो मेन फोकस ये था कि जो भी कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट, अब जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट नीड्स लॉट ऑफ फंडिंग एंड ऑटोमेटिकली पब्लिक गेट्स इन्वॉल्व, एंड वेयर पब्लिक गेट्स इन्वॉल्व you need to protect them, right? You need to protect their money, so you need to set certain standards, set certain provisions, make certain rules, make certain regulations which could help them believe and invest, and their money should be protected as well. Moving ahead to how to read any section. So how to read a section in Companies Act. Companies Act is not a standalone act. ऐसा नहीं है कि वो अकेला खड़ा है, हम अकेला बस एक section पढ़ लिया और सब समझ आ गया. It is not like that. Alongside the section, you always have to remember one thing. Firstly, Companies Act is a rule-based act. So at many places, you come across these words as may be prescribed, which means where are they prescribed? They are prescribed in the rules. तभी हम कहते हैं कि जो Companies Act है वो rule-based act है. Secondly, not just rules but schedules, then circulars, clarifications जो MCA की साइट पे आती है, सब कुछ रेफर करना पड़ता है अगर आप Companies Act सही से पढ़ना चाहते हो. तो कोई भी सेक्शन हम पढ़ते हैं, वी हैव टू रीड इट विद रेलिवेंट रूल्स, रेलिवेंट शेड्यूल्स जो कि बेयर एक्ट के एंड में दे रखे होते हैं, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस. और बात यहीं पे खत्म नहीं होती, वी ऑल्सो नीड टू रेफर टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस. अब फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे आप ये चीज देखते हो कि जहां पे लिस्टेड कंपनी की बात आती है वहां से भी रेगुलेशंस आ जाती है. तो इसी के साथ साथ यू नीड टू टेक केयर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस ऑल्सो. ये नहीं है कि कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो हमें कंपनीज के बारे में सब कुछ पता चल गया. समटाइम्स वी नीड टू रेफर टू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस एज वेल. And the correct way of reading every section is breaking it into parts and preparing notes. I have a detailed video on how to read a section. I will leave the link in the I button above. तो कोई भी जो सेक्शन होता है ना, वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एंड इट्स ऑलवेज बाइफर्केटेड विद कॉमास. तो जहां पे कॉमा आ जाता है, स्टॉप एंड देन इंटरप्रेट एंड देन इंटररिलेट. तो किसी भी सेक्शन को व्हेन यू आर रीडिंग, डोंट रीड इट इन वन गो. यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. आपको समझ नहीं आएगा वन गो में. आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, नोट्स बनाओ और फिर उसे इंटररिलेट करो. दैट इज द करेक्ट वे टू रीड एनी
सेक्शन, जैसे कि आगे उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ सम स्टैंडर्ड वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन द स्टैट्यूट. अब कोई भी स्टैट्यूट या हम यहाँ कंपनी लॉ की बात करें, कंपनी एक्ट की बात करें, तो उसमें काफी सारे लीगल वर्ड्स होते हैं. लाइक आई ऑलवेज से, वो लीगल वर्ड समझने आपके लिए बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू नो द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. Starting with the first proviso. So proviso is like a clause as in a document or statute that begins with the word provided that and is also called proviso. The term proviso is defined as a clause with some condition. तो जहाँ पे कुछ condition या stipulation लग जाती है वहाँ हम word proviso use कर देते हैं. Notwithstanding anything contained. Notwithstanding anything contained is like without being opposed or prevented by या nevertheless. ये एक non-obstant clause है and it's generally an overriding clause. So basically, if it says notwithstanding anything contained in the section or notwithstanding anything contained in the act, that means जो भी ऊपर लिखा है वो इस सेक्शन पे रेलेवेंट नहीं है. जो बात हम अब कहने वाले हैं ये सबसे ज्यादा या सबके ऊपर डोमिनेटिंग है या फिर overriding है. This next is subject to. Subject to is like putting a condition. If this is happening, subject to this. ये चीज होगी subject to this. उस तरीके से. The next is nothing contained in this section shall apply. This is different from जो हमने ऊपर पढ़ा. इसका मतलब है that anything contained in the preceding part of the section would not apply in the situation that begins with this phrase. तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ जाता है दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा. तो इस तरीके से इस क्लॉज को यूज किया जाता है. मूविंग फर्दर, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट. ये एक तरीके से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ते हैं ना JIGL में, ये वो चीज है. यानी कि इफ टू प्रोविजंस आर देयर एंड दे आर समवॉट conflicting, they are somewhat talking about the same thing. So if this word is used without prejudice to the provisions contained in this act, that means both the provisions will operate independently. दोनों ही अपनी अपनी जगह पे relevant रहेंगी. That is to say is basically explanation for the purposes of this section or provision or definition. Sometimes some things have general meaning or general definition and whole of the clause, but for a relevant section they limited or they exceeded, तो तभी हम कहते हैं for the purpose of this section. यानी कि जो भी बात हम बोल रहे हैं सिर्फ इसी section के साथ relevant है, सिर्फ इसी provision के साथ relevant है. As the case may be, as the case may be आता है जहां दो या दो से ज्यादा चीजों की रेफरेंस हो रही है, फिर हम कहते हैं as the case may be. जैसे होगा वैसे आप applicable कर लेना. Shall and may somewhat related to English. Shall establishes a mandatory thing. ठीक है, कोई चीज जो obligatory है, जो compulsory है, not merely directory. And may means permissive or directory. Moving ahead to reforms. So अभी जितने भी changes आए हैं Companies Act 2013 में, वो सबका एक ही गोल रहा है, which is ease of doing business. So ये changes जो आए हैं वो ease of doing business के लिए किए हैं. इसमें काफी सारी amendments आई हैं. Time to time आती ही रहती है amendments. Moving further to agencies under MCA 21. सबसे पहले तो MCA ही है जो कि डील करती है with primary administration of Companies Act 2013, LLP and other allied acts. Then ROC जो कि डील करती है ROC में रजिस्ट्रार हो सकता है, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार. ये मेनली डील करते हैं जो वेरियस ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग कंपनीज एंड डिस्चार्जिंग वेरियस फंक्शंस. देन RD एज द नेम सजेस्ट रीजनल डायरेक्टर, ये हर एक रीजन के लिए होते हैं, राइट. एंड देन ऑफिशियल लिक्विडेटर्स. ऑफिशियल लिक्विडेटर्स भी एक तरीके से होल टाइम ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड देयर job relates to liquidating the companies. Serious fraud investigation office, ये जो ऑफिस है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर फ्रॉड होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए. एंड यू विल बी ग्लैड टू नो कि इसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, लाइक एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिट, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दिस. मूविंग टू नेफ्रा. नेफ्रा इज नेशनल फाइनेंशियल reporting authority. It majorly deals with accounting and auditing standards. So firstly, it recommends accounting and auditing policies and standards.
monitor and enforce compliance, oversee the quality of service of professions, perform such other functions. Then NCLT and NCLAT, for resolving disputes of companies, you can always refer to NCLT and NCLATs. And I also feel कि जो latest book है उसमें ये amendments already given है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए relevant होगी जिनके पास पुराना study material है, right? Moving forward to interpretation of definitions. अब definition को कैसे समझा जाए? Of course, to define means making it definite, distinct or clear. डेफिनेशन से एक नेचर स्कोप पता चल जाता है, तो ताकि बार बार जो है बात को रिपीट ना करना पड़े। तो जिन डेफिनेशंस में मीन आता है वो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशंस होती है, मतलब उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट इज गिवन इन द डेफिनेशन। और जिन डेफिनेशंस में इंक्लूड आता है दैट मीन्स दे आर एक्सटेंसिव डेफिनेशंस, राइट? द डेफिनेशंस which could actually you can mean that you can include lot more than what is written. So these are restrictive and extensive definitions. Then of course explanations are just an addition to explain, and they are part and parcel of the act also. तो ये important हो जाती है कई जगहों पे। Moving forward to extension of period of company law committee, तो जो company law committee है उसका जो time period है वो by 1 year और बढ़ा दिया गया है। Basically the government has extended the tenure of company law committee which was constituted in 2019 by 1 more year. And the next is Amendment Rules 2022, specification of definition details. So they say इसमें small company की जो definition है वो change हुई है। Small company की definition revise होके अब हो गई है, the definition now has further revised by increasing the paid up capital not exceeding 2 crores to not exceeding 4 crores, not exceeding 4 crores, and turnover to not exceeding 40 crores. So this is the new definition of small company. Of course, the definition has been amended so that more companies can be referred as small companies and there are less I would say compliances in the same. So with this we end chapter number 1. Starting with chapter 2 on share and share capital, तो सबसे पहले जो amendment आई है वो ये आई है, it is actually in Share Capital and Debentures Amendment Act 2022, according to which the annexure which was about company share capital and debentures rules in form SH4, now you need to disclose that whether the transferee is not required to government approval under the foreign exchange management non-debt instruments rules prior to transfer of shares or is required and the same has been obtained. तो बेसिकली अब SH4 में आपको एक डेक्लेरेशन देनी पड़ती है कि क्या आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है या नहीं. नाउ यू नीड टू गिव द डेक्लेरेशन, राइट? डेक्लेरेशन हैज बीन मेड बाय द ट्रांसफरी प्रायर टू शेयर ट्रांसफर. बेसिकली द डेक्लेरेशन हैज टू बी गिवन बिफोर द शेयर ट्रांसफर whether you need government approval or you don't need it, and if you need it, have you obtained it? And this applies to now you have to give it under SH4 and that too before the share ट्रांसफर. तो ये चीज याद रखनी है कि शेयर ट्रांसफर से पहले जो SH4 हम फाइल करते हैं उसमें ये नई चीज आ गई है, डेक्लेरेशन ऐड हो गई है, क्या लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो क्या आपने उसे ले लिया है या नहीं. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड रिलेट्स टू प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें उन्होंने इंसर्टिंग ऑफ न्यू प्रोविजो टू रूल 19 which says that no offer or invitation of any securities shall be made to a body corporate incorporated in or a national of a country which shares a land border with India unless such body corporate or national as the case may be has obtained the government approval and attached the same with the private placement offer cum application letter. इसका इम्पैक्ट ये है कि अब जो भी अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई इंडिविजुअल है हु शेयर द लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया, ठीक है, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, दे हैव टू ऑब्टेन द गवर्नमेंट अप्रूवल एंड दे हैव टू अटैच द सेम विद द private placement cum application letter. And further in PS4 the new in the form only this is there, you need to tick that applicant is not required to obtain government approval. This is how it looks in PS4 as well. यहाँ से आपको टिक करना है गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए. ब्रीफ एनालिसिस ये कहती है that no offer or invitation shall be made to the nationals who are incorporating with countries sharing border with India.
and unless they have obtained the government approval under foreign exchange management attached the same, and there's a relevant modification in PS4 as well. So it's like sharing border with India for any body corporate or the nationals who share border with India. They need to get the government approval first, right? So do they need shall be made to the nationals until and unless they make the government approval, they obtain the government approval, and the relevant or the related change has been made in PS also, where you have to tick that you need to obtain the government approval or you don't need to obtain the government approval. And it is only and only for the body corporates or the nationals who share land borders with India. They need to obtain the government approval. Now, moving further to lesson number 3, which is members and shareholders, it is pretty easier. So as you know, registers are open for inspection, right? All of us know that registers of members are open for inspection. In that register, all the details of a member are stated. सारी details होती हैं, name, address, email ID, folio number, number of shares, सब कुछ. But there are certain details which are too personal and should not be shared. So with the relevant amendment now, MCA inserted a new rule to restrict the inspection of register or index or return of a company. According to the amendment now, the company could restrict or company would restrict the inspection of address, right, or registered address if it's a company, if it's a body corporate, registered address, email ID of a person, unique identification number, पैन नंबर शैल नॉट बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन. अब ये सारी चीजें इंस्पेक्शन में आपको नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द पर्सनल डिटेल्स. तो ये तो जानने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्शन में. आई एम श्योर दैट द पर्सन हुज इंस्पेक्टिंग वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ईमेल आईडी और पैन नंबर ऑफ अ पर्सन. सो दैट इज वाई ये जो सारी चीजें हैं ये रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं इन द इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स. रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न, तो ये सब में उन्होंने कर दिया है रजिस्टर और इंडेक्स और रिटर्न. ये जो चीजें हैं अब ये फर्दर इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगी, ना ही इसकी एक्सट्रैक्ट्स या कॉपीज आपको अब मिल सकती हैं. Moving further to lesson number 4, which is debt capital and deposits. So in debt capital and deposits, they notified that the amendment has come according to which every company to which these rules apply, to all the companies to which the company's acceptance of deposits amendment rules apply, they have to file e-form DPT3. They have to file e-form DPT3 up till 31st March of that year, and duly audited by the auditor of the company, and declaration shall be submitted in DPT3. Also DPT3 and 4 are substituted. So the main amendment or the main change over here is this, कि जिन भी companies के ऊपर ये rule apply करता है उन सारी companies को 31st of March तक return file करनी होगी in DPT3, which has to be duly audited by the auditor. तो ये चीज यहाँ पे important है कि उन सारी companies को DPT3 file करना है duly audited by the auditor of the company. Moving further to charges. तो charges में क्या amendments आई हैं? Charges में भी rules में ही amendment आई हैं according to which nothing contained in this rule shall apply to any charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of RBI. So banking company in favor of RBI. So basically rule 3 says that on creation or modification of charges you need to file CHG 1 other than that for debentures and CHG 9 for debentures with ROC, which need not to be filed if the loan or advance is made by banking company in favor of RBI. And section 17 is basically the manner in which RBI can transact the business. RBI can grant loan against the security of promissory notes of any scheduled bank or state cooperative bank. So in this, they are only saying that rule 3 is not applicable to a banking company when they advance the loan, any loan or advance has been made to it, towards the in favor of RBI, Reserve Bank
Bank of India. Moving further, they say that the Ministry of Corporate Affairs, in the new amendment, as in the Companies Registration of Charges, Second Amendment Rules 2022, according to the amendment, Rule 13 is inserted with signing of charge forms CHG 1, CHG 4, 8, and 9 by insolvency professional or resolution professional or liquidator for companies under resolution or liquidation as may be filed. तो जब कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी में जा रही है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम साइनिंग ऑफ फॉर्म CHG 1, CHG 4, CHG 8 and CHG 9 could be done by the insolvency professional, by the resolution professional, or the liquidator. They can sign such forms, right? They can sign such form. तो ये जो है न्यू अमेंडमेंट आई है कि इंसॉल्वेंसी के टाइम पे ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर साइन कर सकते हैं. Moving ahead to lesson number 6, which talks about dividend. So in the IEPF Authority Amendment Rules 2021, the central government has made the rules to amend the accounting, audit, transfer, and refund rules, in which they say, firstly, that it shall be inserted all the shares of the authority in reference or in proviso with 99 shall also be transferred with all the resultant benefits without any restriction. So section 90 deals with beneficial owners like they have given here. Section 99 says register of significant beneficial owners in a company. The company or person aggrieved by the order of tribunal, he may make an application to the tribunal for relaxation or lifting the restrictions. So whatever the restrictions were there, for relaxing them or for lifting them, 1 year is given, that in 1 year you can make the appeal to the tribunal. But if in that 1 year you don't make any appeal, then without any restrictions, the shares along with the resultant benefits will be transferred to IEPF. ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे शेयर्स अलोंगसाइड रिजल्टेंट बेनिफिट जो है वो आईपीएफ में चले जाएंगे अगर वे 1 ईयर में वो अप्लाई नहीं करते कि आप ये रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर दो या फिर इसे अपलिफ्ट कर दो. अगर उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर रहे उसे रिलैक्स करवाने के लिए, तो आप सिंपली शेयर्स अलोंग विद द रिजल्टेंट बेनिफिट्स, शेयर्स भी उसके बेनिफिट्स भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आप उन्हें उठा के आईपीएफ में डाल सकते हो. मूविंग फर्दर, आफ्टर रूल 6 इन आईपीएफ, following rule shall be inserted: a manner of transfer of shares to the fund. So the shares shall be credited to demat account of the authority, be opened by the authority within 30 days. 30 days में जो authority demat account बनाएगी उसमें आपने shares जो है वो transfer कर देने हैं, provided that transfer of shares by the company of the firm shall be deemed to be the transmission of shares. तो हम उन्हें transmission मानेंगे, transfer नहीं मानेंगे. Provided further that shares shall be transferred to the authority without any restriction. तो कोई भी restriction नहीं होगी and no application shall be filed for claiming back such shares. For the purpose of effecting transfer of such shares, the board shall authorize the CS or other person to sign the necessary documents. जो CS है वो सारे necessary documents को sign कर देंगे. The company shall follow the following procedure for the purpose of effecting the transfer where the shares are held with the depository. क्या करना है? Company shall inform the depository. तो depository में सबसे पहले information आती है. On receipt of the intimation, कि जैसे ही पता चला, the depository shall effect the transfer of shares in favor of demat account. वो जो है shares को transfer कर देंगे. For the purpose of effecting the transfer in physical form, अगर हम physical form की बात करें तो company secretary shall make an application for issue of new share certificate. New share certificate जो है वो issue करवाया जाएगा, and on receipt of the application a new share certificate shall be issued, जिसके ऊपर लिखा जाएगा issued in lieu of share certificate number this for the purpose of IEPF of section 90. तो share certificate के ऊपर ये चीज लिखी जाएगी and particulars of every share certificate shall be informed SH1, and after issue of a new share certificate the company shall inform the depository to convert the shares
into डीमैट एंड ट्रांसफर इन द फेवर ऑफ द अथॉरिटी. आई बिलीव कि ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपके पास लेटेस्ट बुक है तो उसमें ऑलरेडी गिवन है, राइट. तो ये बेसिकली ये कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द ट्रांसफर, अगर तो डिपॉजिटरी के पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट इंटीमेटिंग देम, इन्फॉर्मिंग देम इज इनफ, एंड एज सून एज दे आर इंटीमेटेड दे विल ट्रांसफर इट, कोई दिक्कत नहीं है. अगर फिजिकल फॉर्म में है तो कंपनी सेक्रेटरी को ये करवाना पड़ता है. ही हैज टू अप्लाई फॉर अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट, then company gives the new share certificate on which they have to write issued in lieu of share certificate number this for the purpose of IEPF. Thirdly, every share certificate has to be issued under SH1. And fourth, after the issue of new share certificate, company has to inform the depository as well. Company shall make the transfers through corporate action and preserve the copies. While effecting such transfer, the company shall send a statement to the authority in IEPF 4 within 30 days. स्टेटमेंट भेजनी है जिसमें सारी डिटेल्स होंगी ट्रांसफर की, एंड द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच अ कॉपी ऑफ द ट्रिब्यूनल. वोटिंग राइट्स किस तरीके से एग्जीक्यूट की हैं, और ट्रांसफर टू द फंड शैल रिमेन फ्रोजन. अब जो शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं उसकी जो वोटिंग राइट्स हैं वो फ्रीज कर दी जाती हैं ताकि कोई भी उन्हें यूज ना कर पाए. कंपनी शैल मेंटेन ऑल सच स्टेटमेंट्स इन सेम फॉर्मेट along with the supporting documents. All benefits accruing like bonus shares, split, consolidation, fraction, except the right issue shall also be credited to डीमैट अकाउंट. वो भी सारे डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे. इफ द कंपनी इज गेटिंग डीलिस्टेड, द अथॉरिटी शैल सरेंडर. अगर वो डीलिस्ट हो रही है तो उन्हें शेयर सरेंडर करने पड़ेंगे, एंड द प्रोसीड्स रियलाइज्ड विल बी क्रेडिटेड टू द फंड्स और सेपरेट, एंड अ सेपरेट लेजर अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड. In case the company whose shares or securities are held by authority is being wound up, the authority may surrender the, again अगर वो wind up हो रही है तो भी उन्हें surrender करने पड़ेंगे shares. Any further dividend received shall be credited to the fund, because shares के साथ साथ हमने क्या कहा था कि resulted benefits भी आएंगे. तो जितने भी benefits उसके ऊपर accrue होते हैं, bonus shares, dividend, वो सब उन्हें मिलेंगे. Any amount required to be credited by companies to the fund shall be remitted to the specified account of IEPF which is maintained in PNB account, and authority shall furnish the report to central government as and when non-compliance by rules comes to the knowledge. तो ये वो rules हैं जो कि आपको समझने हैं, which we talk about in the new insertion. Moving ahead to next amendment which came under the accounting audit transfer and refund second amendment rules 2021. The amendment is a major step towards the mission and vision of government of India of ease of living and ease of doing business. इसमें क्या हुआ, इन्होंने simplified claim settlement process कर दिया through rationalization of various requirements under IEPF. For claimants, requirement of advance receipt has been waived off. There's no need of एडवांस रिसीट. क्लेमेंट्स को पहले कहते थे ना कि एडवांस रिसीट लेके आनी पड़ेगी, अब उसकी जरूरत नहीं है. सेकेंडली, रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट ऑफ विल एंड विल हैज बीन रिलैक्स टू 5 लाख रुपीज. वो 5 लाख तक की रिलैक्सेशन उन्हें दे दी गई है. एंड नोटराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज बीन रिप्लेस्ड विद सेल्फ अटेस्टेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिडेविट्स एंड श्योरिटी रिलेटिवली हैव बीन ईज. तो मतलब जो पहले नोटराइजेशन करानी पड़ती थी वो अब सेल्फ अटेस्टेशन से चल जाती है, एंड जो requirements of affidavits and surety है वो भी काफी relaxation दे दी है. So for companies, requirement of attaching documents related to unclaimed suspense account वो भी eased out कर दिया गया है, and companies have given flexibility to accept the transmission documents with succession certificate या will as per their internal approved procedures. And newspaper advertisement requirement जो है for the loss of physical share certificate वो भी 5 लाख तक waive off कर दी गई है. तो इससे काफी ज्यादा प्रोसेस जो है वो सिंपल हो गया है. सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स. आई विल सी यू super soon with part 2. Make sure you understand it completely. I'll see you super soon with my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.